long-term obstacle for all of us and a challenge is, like Samir said, sustainable or whatever you call it. When we as Indians go out of country, we become very responsible. We don't put trash anywhere. Because we I will take a couple of minutes to deliberate upon ICC because we are only talking about tourism as a sector of economy here. Indian Chamber of Commerce will be completing 100 years of its journey next year. We are a 100-year-old organization. We have 11 offices in India and 15 global chapters. We have 2,000 plus direct members, and those members includes the billionaires of India to normal companies. We have Adani's as our members, we have Reliance as our members, Aditya as our member, at the same time normal companies are also our members. The chamber has got around 65 chairs domestically who handles various portfolio, and we have 150 plus employees spread across these 11 offices. We have national committees, we have international committees, so it's a very large ocean. And we organize around 250 programs in 365 days in a year, globally. So in the same day, something might be happening in Dar es Salaam, Tanzania, London, Delhi, Dibrugarh. So it's like that. And no one will know the other team what they are doing. It's so huge. It's so huge an organization. Now, obviously, we have come to Jammu and Kashmir. This is our second conference in Jammu and Kashmir. The first conference, which took place a couple of months back, was on power and energy. Anil Razdan, who happened to be the Power Secretary of India, is from this state. And he is our national chairperson on power and energy. He organized a conference on power and energy here. It's a privilege that Farooq Saab is part of our team. He is the leader of the tourism committee for the chamber here. Thank you so much, Farooq Saab, for paving the way and showing us the path of how to operate in Jammu and Kashmir. He is our leader for tourism here. We have also appointed Mr. Khalid Wani as a state chairperson. Mr. Wani largely shuttles between Delhi and Dubai and Srinagar. His father was an IAS officer. And Mr. Wani is a state chair and... Of course. Farooq Saab is me, sir. So thank you first of all to you and Farooq Saab for that. Revealing J&K tourism treasures. So we have treasures there. Everybody of us accept that we have treasures. The unfortunate part is, how many treasures till date have we found? Not even 10%. Come to the history. It's very important. So you are the people who can make the difference. The responsibility lies probably more on you now, sir. You have to handle us. Together we'll do it. Today is a very auspicious day. I would like to say Eid Mubarak to everyone. And I think after Eid, this is the first get-together of the entire tourism industry. So, inshallah, I think the coming year will be more successful and very successful. I know I've been associated with Farooq Saabji since I was president of the Indian Tour Operators and he was the secretary here. Hotels and other things are doing something. So we need to solve this problem. Because आपने शुरू करा था गंडोला, पर उसको कुछ और लोग exploit कर रहे हैं. And the tourism industry of this beautiful, the most beautiful place on this planet is getting a bad name. So one is this, I have a suggestion in many countries where we represents the houseboat owners, who represent the adventure tour operators, the travel agents association, the tour operators association. So you are the future of this beautiful state. You know, the French Revolution was started by 7 people. Sikhism was started by 5 Panch Pyaras. And today, it is spread all over the world. So all of you out here, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज ये हमारे साथ, क्योंकि ये एक ही टीम है, एक ही घर है, ये सारे जितने भी यहाँ हैं फारूक साहब के बड़े वेल विशर है और फारूक साहब हम सबों का वेल विशर है।
इसलिए इसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। फारूक शाह। हाँ, फारूक शाह। तो बाकी बहुत अच्छा लगा ज्योति जी ने जो भी यहाँ बताया, उन्होंने गोविंद साहब ने, मगर साथ ही मुझे आपसे कुछ बातें जरूरी मुझे इज्जत करता था मैं बोलूँ। आपने बड़ा यहाँ कहा कि हमें 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल बनाने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ ये स्कीम भी रखी है जो आपने कही, मगर जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मगर मैं डरता नहीं हूँ, यहाँ वो नहीं चलता है, यहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हम भी चाहते हैं आज के दिन में अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ये हमने एलजी साहब को भी सामने कहा कि इसकी जरूरत है, अगर उन्होंने एक नीति से दिया है, इधर के शुरू तो यहाँ से होना चाहिए। आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, तो पहले तो शुरू करा ना अपने जम्मू कश्मीर से, इसमें क्या हर्ज है? हमें आपको तो इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना, वो बेचारे नहीं करेंगे। मगर यदि वो नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बड़े बड़े महफिलों में बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वहाँ इस बात को रखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड स्टार्ट इट फ्रॉम द J&K। इसमें यही नहीं है, एवरीबडी इज इन्वेस्टर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। जो भी आज के दिन तक यहाँ बना है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही बनाया है। खासकर मैं वादी की बात करूँगा, कश्मीरियों ने बनाया है। यहाँ जम्मू वाले भी, हम गए हैं जम्मू में, हम कटरा में भी गए हैं, हम दिल्ली भी गए हैं, मगर यहाँ कोई नहीं आता है। Any excuse I get to come to Srinagar is my first thing. I hop onto a flight and I'm here. And I think I've done that very well. And I think I love this city. I think I've said a lot for all of you. Because it's not only the city, but I love the people in it. Thank you. Because I think my association with all of you goes so far back that I think I've grown up in this city. I still love the city and I'm back. Well, that's great. Because that's how tourism goes forward. Because tourism is all about people to people connect, and that's what we do. Because unless we connect with each other, I don't think tourism can go forward. So I'll quickly run through it because I know we are short of time because we started late. But we all know Travel Agents Association of India because I think 90% of people sitting here are our members. And I'm so proud to be associated with each one of you again. So that's what is said, the journey of 1,000 miles begins with a single step, and that's what Subhashji said. That's what we are doing. We are here with ICC for the first time. So just quickly about us, which I don't need to actually say that, but TAI is the oldest association of this country. We started in 1951, 20 region chapters. There's nothing that TAI doesn't do, inbound, outbound, ticketing, tourism, MICE, weddings. I think because it is a mother association, we actually indulge in all the aspects of tourism, and we feel very satisfied that we are delivering to the country to our best. And of course, those are the things that TAI does. We work very, very closely with the government and on a daily basis. Like Swaji also said, we are with the Aviation Ministry, we are with Ministry of Tourism at the center and states. I work very, very closely with all the states in this country today, and that is how TAI has emerged to be the most prominent association because of that. Because we saw the shift happening. Of course, when TAI started, it was only into outbound, only into ticketing. Because there was nothing as called tourism. हम सब अपने रिश्तेदार ढूंढते थे कि हम कहाँ जाएं उनके पास रहें. तब तो ना होटल थे और ना ज़्यादा airlines थी. So that is how tourism came across, and that is how TAI has evolved to move forward. So just to come on to the thing that, what is TAI's vision? We, of course, that is why I'm here today. We need to strengthen by getting a very stronger and more efficient. To grace this, Mr. Mushtaq Ahmed Chai Sahab, Mr. Subhash Goyal, Mr. Jyoti Mayal, Mr. Chandan, Mr. Banerjee, Mr. Avinash, Mr. Dalip Kumar, heads of the Tourism Trade Associations of Kashmir, representatives of the Khara Khuruf, members of the ICC Tourism Committee, Kashmir. On behalf of Tourism Expert Committee of Indian Chamber of Commerce, I extend a very warm welcome to all of you. Thank you for coming in. It's very proactive, forward-looking Chamber of country today.
The prime focus of ICC is to have a strong voice for policy advocacy, with all stakeholders deliberating on economy and social impact. What is the social impact? And this is what we try and maybe with the government of Mr. Goyal to say that we will take the message to the Prime Minister's office. This is what our major role is. Today we are discussing the same topic where we are saying that tourism beyond G-20. MICE is my forte, and then I am going to talk about only MICE. Give you some background of it, what MICE brings the change, whether it's a social impact, whether it's an economic impact. MICE has already been a priority area. If you look at the recent trends, especially in J&K, the development has been unprecedented. Tourism India was to grow, recent initiative by the Ministry of Tourism over the years. MICE tourism has taken a lead in growing because of rising economy, mainly the importance of the regions like J&K. The estimated global size of the MICE, which is going to be touching around 1,200 million. The estimated market size of the MICE in India is 38,000 crores, in which nearly 65% are the B2B events. That has an importance. The 65% of the MICE says that we must give a proper our sufferings and suggestions how to save this ailing industry. So that's one part, because it's the need of the hour. If it's not saved now, then it will be saved never. Of tourism in Jammu and Kashmir, most importantly in the Kashmir Valley. But now, since last 3-4 years, of the time, tourism industry is growing by leaps and bounds in Jammu and Kashmir. And ये तो आज का प्रोग्राम था, ये ICC इंडियन पैन टूरिज्म का था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आज यहाँ सारे स्टेक होल्डर्स थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फारूक अहमद शाह साहब, जो यहाँ आज इस टूरिज्म के चैप्टर के चेयरमैन बन गए। तो बहुत अच्छा लगा, टूरिज्म फुली डिस्कस हो गया हर तरीके से, यहाँ क्या चीज़ों की कमी है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अल्लाह से दुआ मांगते ही ऐसे ही पीस रहे और ऐसे ही टूरिज़्म चले। 2-3 साल से बहुत ज़बरदस्त टूरिज़्म चल रहा है। हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी उसमें बड़ा काम कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया, लोकल हमारे स्टेट के हमारे लेफ्ट LG साहब ने भी बहुत मेहनत की, जिससे आज के दिन में टूरिज़्म ही टूरिज़्म कश्मीर में वो नहीं है। हकीकत ये है कि जहाँ आप गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की, सोनमर्ग की, वहाँ जगह ही नहीं है उस बेचारे के पास, होटलियर के पास। वो थोड़ी सी एक जगह बनाते जहाँ हमारे ड्राइवर जो होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं, उनके लिए 1-2 कमरे बनाए। आपको पता ही है यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, हालांकि विज़न बड़ा है, विज़न बड़ा होना चाहिए। इन चीज़ों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ये इजाज़त देनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, वो कहाँ रहेगा, उनको भी तो वहीं रहना है। तो गवर्नमेंट को इतनी फैसिलिटी तो देनी चाहिए कि होटल के साथ 1-2 कमरे ड्राइवरों के लिए, जो टूरिज़्म के वो होते हैं जो गाइड वाइड, उनके लिए कमरे 1-2 बनकर, क्या दैट इज़ फॉर द टूरिज़्म। अब इंशाल्लाह अब तो टूरिज़्म का टाइम आ गया, अभी तो शुरू ही था, अब तो शुरू है माशाअल्लाह। अब तो टूरिज़्म का ही ज़माना रहेगा, और कश्मीर में अगर कोई इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म है। और ये गाड़ी भी जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, बाकी चीज़ भी, दिस इज़ द ओनली। जहाँ तक इस आज के इस जो 1 डे कन्वेंशन का सवाल, ये जो हमारा ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स टूरिज़्म चैप्टर एट द नेशनल लेवल, उन्हें यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया। और हम और बेस्ट विश देम, खासकर जो नेशनल लेवल पर चैप्टर चेयरमैन टूरिज़्म कमेटी सुभाष गोयल, उसके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने यहाँ श्रीनगर को जो है यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया। मकसद यही है कि जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, देयर इज ह्यूज पोटेंशियल फॉर द टूरिज्म, वी कैन बी द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। और हमें अभी जो हमारी काफ़ी डेस्टिनेशन जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रही है कि हम बढ़ावा दें टूरिज़म को, बिकॉज टूरिज़म कैन बी आवर मेजर एम्प्लॉयर। और इसमें रॉ मटेरियल यहाँ की डेस्टिनेशन हैं, जो नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस। तो हम सब की यही कोशिश होनी चाहिए। आज भी यहाँ जो
आए थे, सारे टूरिज़्म लीडर्स जो मैं हर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स आए थे, प्रोमिनेंट जो है टूर ऑपरेटर वो आए थे। तो हम सब की यही कोशिश चाहे कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और हमारी कंट्री का ह्यूज, और हम 1% भी अगर हमारी अपनी कंट्री से टूरिज़्म लाएँ तो दैट इज़ ह्यूज नंबर। और लेकिन हम सब की ये कोशिश नहीं चाहिए जो टूरिस्ट यहाँ आए उसको मेहमान की कदर करनी है, वी हैव टू ट्रीट हिम एज ए गेस्ट। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी हैव टू एंश्योर द रिपीटेड टूरिज्म। जो यहाँ से आए ही शुड गो विद उसको वो एक यहाँ के जो हॉस्पिटलिटी ऑफ द पीपल है, मेहमान नवाजी है, वो याद रहे उसको ताकि वो दोबारा आए। वो हमारा यही मकसद है। और यहाँ पर काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई और रिकमेंडेशंस हुई टू द स्टेट गवर्नमेंट। हमें उम्मीद है कि हम सब इसमें कोशिश करेंगे जो भी यहाँ जो टूरिज्म के लिए करना होगा वो हम सबको करने की कोशिश। Well, this was held by Indian Chamber of Commerce because they've opened a new chapter in Jammu Kashmir, and this was more looking towards the problems and issues which the travel fraternity is facing. So I represent the Travel Agents Association of India as the president. We have a very big chapter here with a lot of members. So we have been also advocating for all the issues, and that's what we want to take forward with the government to say how Srinagar can be one of the best destinations of our country. देखिए, जम्मू कश्मीर तो एक बहुत ही बढ़िया स्टेट है जिसको जितना कम कहें, आई थिंक लोगों को बाहर जाना भूल सकते हैं अगर ये स्टेट अच्छी तरह डेवलप हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ जाए, होटल्स और हो जाए। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फ़्लाइट्स भी और चाहिए। अगर फ़्लाइटें फुल जाती हैं तो बहुत फेयर महंगे हो जाते हैं। तो हम सबको देखना पड़ेगा कि ये अराउंड सारा कुछ ठीक हो। और ये G20 के बाद हमने देखा, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट G20 एंड हाउ इट इज़ डेवलपिंग, आई थिंक इट नीड्स टू गो फॉरवर्ड and this can be developed. It can be the best destination of our country. But yes, the government and the industry have to work together to make this happen. देखिए, ये तो एक कहने की बात है कि डिमांड और सप्लाई की बात है, क्योंकि जब भी कहीं भी डिमांड बढ़ेगी तो और सप्लाई कम होगा तो कॉस्ट ऊपर जाएगी, बिकॉज सब चाहते हैं कि हम एक ही दिन में सब कुछ इकट्ठा कर लें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान सोचना चाहिए, हर स्टेट के लिए, हर कंट्री को भी ऐसे सोचना चाहिए दैट वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन द वे कि हमें एक ऑन गोइंग डेस्टिनेशन चाहिए। हमें एक मतलब वो कहते हैं ना, अंडे गोल्डन एग वाली हैन नहीं चाहिए जिसको एक बार यूज़ करें। सो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड ऑफ कोर्स आपका जैसा टूरिस्ट और फुटफॉल्स बढ़ेंगे, आपका ऑटोमेटिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोग और होटल बनेंगे तो ऑटोमेटिकली फुटफॉल्स आएंगी तो एयर कैपेसिटी बढ़ेगी। So I think it is just a question of time that I'm sure all these things will progress in the right format, and people are not only looking at 5 stars, they're also looking at the experience of living with local communities. So I think that is another place that needs to be developed quickly, because आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे हमने स्पेशली देखा है कि बहुत लोग चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंशियल ट्रैवल हो, और एक्सपीरियंशियल ट्रैवल इज ऑन द राइज। पीपल वांट टू लिव विथ लोकल कम्युनिटीज, उनका खाना खाना चाहते हैं, उनका कहते हैं कैसे रहते हैं, वो सब देखना चाहते हैं। तो आई थिंक हमको उस पर भी फोकस करना चाहिए। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 100 साल पुराना चैम्बर है। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गोयल है, मैं चेयरमैन हूँ टूरिज़्म और एविएशन कमेटी का। रूट साथ जो सेक्रेटरी थे टूरिज़्म के यहाँ पर, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर के चेयरमैन हैं। तो हमने अपना ऑल इंडिया जो टूरिज़्म के इश्यूज़ हैं उनको टेकअप करने के लिए सबसे पहले हमने आउट स्टेशन अपना चैप्टर JNK चैप्टर के साथ यहाँ पर उसकी एक तरीके से इनाग्रेशन भी है, और तो उनके जितने भी JNK चैप्टर के इश्यूज़ हैं वो हम टेकअप कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जितने भी इश्यूज़ आज यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पासेस का हो, चाहे वो गंडोला की टिकटों का हो, चाहे वो यात्रा के टाइम पे यात्रा की टिकट्स का हो, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट के पासेस का हो ड्यूरिंग यात्रा, या वो हाई एयरफेयर्स टू कश्मीर एंड हाई होटल रेट्स की इशू हो, ये सारे इशूज़ हम हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करें। सर, आपने यहाँ पर अच्छी बात की कि यहाँ पर बहुत सारे इशूज़ पर बात की, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, यहाँ पर गंडोला की अगर हम बात करें तो फेमस गंडोला है, लोग आते हैं गंडोला की राइड करते हैं, लेकिन जब हम टूरिस्ट या बाहर के जो एजेंट होते हैं
ये यहाँ के एजेंट होते हैं, वो जब गंडोला की बुकिंग करते थे उनको बुकिंग नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब हम बाहर वालों की देखते हैं, जैसे मैक माई ट्रिप है, वो एक शिकायत आ रही है हमारी, जब यहाँ के जो टूरिस्ट एजेंट्स हैं उनको वो बुकिंग, उनको स्लॉट मिलता है कि ऑनलाइन वालों को भी बुकिंग दे और उनको एक कोटा दे दे, और बाकी जो टिकटें हैं वो यहाँ पर कैश काउंटर पे बिके। जो आदमी लास्ट मिनट पे आता है उसको भी टिकट मिलनी चाहिए। तो गंडोला राइड सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक कर दें तो ज़्यादा लोग जा सकेंगे। और कुछ टिकटें जो भी ऑनलाइन है उनकी टाइमिंग स्लॉट्स हो जाएं और उनका कंट्रोल ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स के पास ना हो, उनका कंट्रोल यहीं पे हो और वो एक राशन करें कि भाई इतनी टिकटें जैसे बिकती जाए वैसे वो करती जाए। बिल्कुल, आपने महंगाई की बात की तो यहाँ पर जो टिकटें हैं वो काफ़ी महंगी बिकती है। जैसे कि अगर बाहर से कोई टूरिस्ट यहाँ आना चाहता है, लेकिन उससे अच्छा है कि वो दुबई जाए, लेकिन जब वो एयरफेयर की बात होती है यहाँ पर वो उनको महंगा मिलता है। वो देखिए, वो भी इश्यूज हमने टेकअप करे और हम और टेकअप करेंगे।